what is the standard data? So we will go to the standard data for May month. See, 75, 100, 200, and last data is 100. Okay, and now we are observing what type of graph will be there. So let's move to the graph. So let's see here, 75 is there. Next one, see, 75. Third, next one 100. Next one 200, and once again 100 is there. So only we have to draw, find the limit. Okay, this is a 75, which is a maximum value, means we have to increase that bar graph up to that particular extent. उसके आगे नहीं जा सकते. For second one, let's go back to the data. अभी data थोड़ा check कर देते हैं. What is the data for you? Okay, first 75, second 100, 200, and 100. Let's go back. अब यहाँ पे देख लो. So for for region second, so the data is 100. So see, there is 100 and this is the data. So if you draw like this, so this is the second one. Now 200 is the data for the third graph. So draw like this and color it according to you, or according to the your convenience, for according to your wish. Just you color it in a different format. Now last one, थर्ड का रीजन, थर्ड का जो डेटा दिया हुआ है उतना है 100 है. तो मैंने क्या किया, जस्ट go through this scale, mark like this and make a box. So this is the data for first region, which is 75, second region, which is 100. So I will write it here, 75, 100, here 200, and here is 100. So what is the key point? So whatever the detail of that particular village, place, number of students, classes, division, okay, village. So you write it on a x-axis, and the total scale numerical data that we have to write it on a y-axis. Clear? So likewise, we have to complete the data. Similarly, just quickly we will move to the next data. थर्ड डेटा है जो हमें नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल हो गया, मई हो गया. अब जून के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द डेटा. ओके, एडिट डेटा एडिट नहीं करेंगे, हम उसी डेटा पे बात करेंगे. सो 150 इज देयर, 75 इज देयर, नेक्स्ट वन 150 एंड 100 इज देयर. ओके, सो ये डेटा हमें दिया है. 100 मतलब 100, 150, 75 और 150. क्लियर है? सो लेट्स क्विकली गो बैक. जून के बारे में, जून के बारे में अगर बात करें तो पहला डेटा था वो हमें पता है. व्हाट इज द डेटा? 100. सो हियर 100 is there. Next one, here 150 is there, and 75. Here is a 75, and last one 150. So according to this scale, okay, according to this scale, just make a horizontal line like this, and then draw bar, vertical bar. Okay, so this is the region for, this is the bar for region A, this is bar for region B, C and D, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी आप बता सकते हो. क्लियर है? सिमिलरली जस्ट वी विल मूव टू द लास्ट वन. ओके, सो लास्ट बार देख लो. या दिस इज लाइक दिस, लाइक actually if you observe the data, each and every question is totally depends on the given data. So here given data is different, so definitely bar is different. जैसा मतलब डेटा मिलेगा, according to that आपको यहाँ पे क्या ग्राफ मिलेगा. अब यहाँ पे पहले पहले डेटा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब अपने हिसाब से तो डेटा देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. लेट्स चेक इट. 75, 100, 125 एंड लास्ट वन 200. ठीक है, सो डिफरेंस देख लो. 25 25 का